विल कंटिन्यू। गतकाली आमे कौन पढ़ी ना पोषण रे आमे पढ़ी कौन ना पोषण कौन व्हाट इज न्यूट्रिशन, चय कौन अपचय कौन चयापचय कौन, व्हाट इज एनाबोलिज्म, व्हाट इज कैटाबोलिज्म, व्हाट इज मेटाबोलिज्म ए विषय जानी एंड टाइप्स ऑफ फूड हम जानी से फूड रे विभिन्न प्रकार खाद्य विषय जानी कौन कौन श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, धातुसार बा धातव लवण, जीवसार बा विटामिन आ गोटे मुख्य अंश होची जल एति जानी। तो आज कौन जानिबा पोषण प्रकार भेद। ता पूर्वर उद्भिद कौन हुए ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया होता है से शोषण प्रक्रिया भी होता है। तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे पत्रर केउ अंश साहाय्य करे ता विषय आम टिके जानिबा। आपको हमें कौन कहबा दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज लीफ। आपको हम पत्र बोली कहबा। पत्र रे आपन छोट छोट छिद्र सब था। ए छोट छोट छिद्र को हमें कौन कहि थाउ स्टोम बा स्टोमाटा कहि थाउ। स्टोम बा स्टोमाटा। ए स्टोमाटा रे एक्चुअली कार्य कौन हमें जानो बहुत गुडे छिद्र थाए पत्र रे। जो छिद्र द्वारा जो छिद्र साहाय्य रे कौन हुए ना गैसियस एक्सचेंज हुए, वायु चलाचल हो पाए, जलीय बाष्प बाहर भीतर जाई पाए, बाहर आउ थे कौटी जाए जदि जलीय बाष्प अंगारकाम्ल एसबू बाहर भीतर जाई पारला या सहित आउ कौन हुए देखिबा से जो स्टोम हमें कहि थाउ स्टोम बा स्टोमाटा ताहा ठीक अच्छे आम टे तार स्ट्रक्चर को जाना ये स्टोमाटा देखा के आम जो कहली छोट छोट छिद्र सब अच्छी से छिद्र को जदि आम बड़ करी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बा जटिल अणुवीक्षण जंत्र आम देखा देखिले आमको से किभली देखा जाए चित्र देखा ये हूँ गोटे प्रकार। ये हूँ आ गोटे प्रकार। तो आमर देख ये मझी ये खोला ही अच्छी ये मझे ये बंद ही अच्छे ठीक अच्छे। तो आपको खोला है बेले आपको कौन कह ना स्टोमाटा ओपन स्टोमाटा बा स्टोम खोला ही अच्छे दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा क्लोज। कहीं कह प्रथम तार गाठनिक आकृति देखा गठन अनुसार जब आम देखा ये स्टोमाटा बा स्टोम कि देखा जाए देख प्रथम आ भितर जो अंशटा देखुच आपको आम कौन कहवा दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल। दिस कॉल्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल चारिपटे जो देखुच एगुड़े इज कॉल्ड एक्सेसरी सेल which contain chlorophyll। प्रथम आम जाना या गार्ड सेल बोली कहवा। ये गार्ड सेल गुड़िक परस्पर दिन बेले कौन हो खोला थाए राति बेले कौन हो बंद हो जाए जो खोला थाए कहीं थाए ता भी जाना। ये जो गार्ड सेल गुड़िक कार्य कौन जो सूर्य किरण पड़े सूर्य किरण तापमात्रा अधिक आसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अधिक थाए पीएच अधिक थाए तो सही समय ये खोली था। ये गार्ड सेल गुड़िक कौन था सहित जो सेल गुड़िक थाए ताको आम कहे एक्सेसरी सेल्स। ये एक्सेसरी सेल्स काम होचे दे कंटेन द क्लोरोफिल से हरित लवक बा सबुज कणा रखि हेतु से कौन करती
ना आमको आलोक श्लेषण प्रक्रिया साहाय्य करते। दिन बेला जिते पीएच अधिक हो जाए, टेम्परेचर अधिक हो जाए, तापमात्रा अधिक हुए, आउ कौन हुए ना सूर्य किरण आसे, सूर्य किरण पड़े, तो सूर्य किरण अधिक, तापमात्रा अधिक, टेम्परेचर अधिक जदि हो जाए, पीएच अधिक हो जाए, से कौन हुए दिन बेला ये गार्ड सेल टी खोला था। किंतु सेम हुए जदि आम राति देखा ये गार्ड सेल टी बंद था। गार्ड सेल कहीं बंद था ना राति आमको लाइट मिले, सूर्यालोक मिले, कनसेंट्रेशन ऑफ पीएच तलू थाए, टेम्परेचर तलू थाए, सूर्यालोक लाइट न थाए, तेणु राति कौन हुए ये स्टोमाटा बंद थाए। तेणु स्टोमाटा आमको कौन पे काम करे, स्टोम आमर की साहाय्य करे, स्टोमाटा इज मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज, इट्स मेंट फॉर वाटर वेपर एक्सचेंज, इट्स मेंट फॉर photosynthesis as it contain chlorophyll in it, and the accessory cells are contain chlorophyll, so it's meant for photosynthesis. आमे इस स्टोमाटा बा स्टोम रे तार एक्सेसरी सेल्स गार्ड सेल्स कौन हुए ना गार्ड सेल टा दिन बेला ओपन खोला था, राति रे बंद था। आउ सेते बेले कौन हुए गार्ड सेल रे जेहेतु क्लोरोफिल रही था, ये हमको आलोक श्लेषण प्रक्रिया माध्यम आमको साहाय्य करे और श्वेतसार जातीय खाद्य आम पाई था। तार इक्वेशन भी समीकरण टी आम जानीदेवा। देखो दुई प्रकार इक्वेशन कंफ्यूज हेबनी। फर्स्ट इक्वेशन 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight as well as chlorophyll, it will give rise to glucose. It is the carbohydrate. Clear? Then the equation of photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it gives rise to the carbohydrate type of food, or we can say it's glucose plus 6 molecules of water plus 6 molecules of oxygen, it is released. Clear? Used carbon dioxide, released oxygen. That oxygen we are using. And another equation is just will change here. Six CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2. Clear? All 6. So it is easy to remember. आपको टिके मन रखिया पे बहुत इजी हबो। कौन? The 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll, it will give rise to C6H12O6 plus 6O2. And also you can write plus 686 kilocalorie of energy. All 6s of energy. Okay. So after this stomata will jump to different types of nutrition. Types of न्यूट्रिशन। बर्तमान जानिबा जो न्यूट्रिशन पोषक हम जानले पोषण द न्यूट्रिशन आर प्रकार भेद हम जानिबा। तो कौन जानिबा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर। न्यूट्रिशन इज जनरली टू टाइप्स आर देयर, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So let me define what is autotrophic nutrition. As we know, the first one autotrophic nutrition and the second one heterotrophic nutrition.
So first of all, we have to know what is autotroph, then what is autotrophic nutrition, right? Auto, let me define clearly. Autotrophic, auto means own, trophic means food level, right? Autotrophs in the sense, if the organisms they can prepare their own food is known as autotrophs. As they are producing their own food, they are also known as producers. So who are autotrophs? The organism which can prepare their own food by means of by having four elements as we have discussed, like carbon dioxide, like chlorophyll, like water vapor and sunlight. By having these four elements, the green plants or green colored pigments or parts of the plant, they can prepare the carbohydrate type of food and by the process of photosynthesis. So आलोक श्लेषण प्रक्रिया माध्यम श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिवार प्रक्रिया आमे कौन कही आलोक श्लेषण प्रक्रिया। ये आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो प्राणी माने करिथान जो उद्भिद माने करिथान से उद्भिद माने को कहउची प्रोड्यूसर्स बा उत्पादक बोली आमे कहिथाउ। कौन कहिथाउ? प्रोड्यूसर्स और उत्पादक ओडिया। So autotrophic nutrition in the sense they can prepare their own food. We can write all the example is these are also called producers. Number one example is, for the example, all green plants. All green plants is the example of autotrophic nutrition. Next comes about heterotrophic nutrition. Hetero means what? Hetero means different. Trophic means food level. Okay. The nutrition in the sense, heterotrophic nutrition means the organisms which cannot prepare their own food and for the food they have to depend on the autotrophs is known as हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो प्राणी किंबा उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही आ खाद्य पई से माने काहा ऊपर अन्य ऊपर निर्भर करन से अन्यटा के अन्य ऊपर अर्थ से माने उत्पादक होई पारंती से माने सबुज उद्भिद होई पारंती से माने अन्य प्राणी होई पारंती अन्य तृणभोजी प्राणी होई पारंती मांसाहारी प्राणी होई पारंती। जो माने निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही खाद्य पई अन्य ऊपर निर्भर करंती से मान को हमें हेटेरोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कही था। हेटेरोट्रॉफ्स अर्थ से परभोजी बोली तो परभोजी आउ स्वभोजी क्लियर ना। स्वभोजी किए ना ऑटोट्रॉफ्स जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती को प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे। परभोजी किए ना हेटेरोट्रॉफ्स जो माने निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही खाद्य पाई से माने अन्य ऊपर निर्भर करन। अन्य अर्थ आमे अन्य स्वभोजी प्राणी हो अन्य तृणभोजी प्राणी हो अन्य मांसाहारी प्राणी भी हो। सो प्राणी और उद्भिद अन्य ऊपर निर्भर करेंगे निजे निजे करें निजे निजे प्रस्तुत करें खाद्य तो से कहूँ परभोजी क्लियर। दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉफ्स वी कैन से डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स they are having only 4 types of heterotrophs are there. How many types? 4 types of heterotrophs. A परभोजी पोषण होची 4 प्रकार। First of all, it is known as holozoic. Holozoic और प्राणी समपोषण। हॉलोजोइक और प्राणी समपोषण। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल हॉलो मीन्स व्हाट? टोटल। जूम मीन्स एनिमल। आमे कोन कहूचे चिंगुड़ी गोटे खाइले मन कर छोट चिंगुड़ी खाइले खाई खाऊ पूरा खाई दौचे किंबा जेकोसी छोट गोटे ऑर्गेनिज्म धरिया किंबा रसगोला धरिया किंबा गोटे छोट मिठाटे धरिया आमे कौन कौचे टिके 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 चाखी खाऊचे तो आम टोटाल जिनस खाऊचे टोटाल जिनस आम गिड़ी पार रसगोला कौन करूँ आम डायरेक्ट गिड़ी देवा किंबा टिके टिके करी खाइबा टोटाल खाइदेवा। तो ये प्रक्रिया को कहूँ हॉलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी सम पोषण। आमिबा कौन करुचे आमिबा गोटे जिनस आसला ताको धरिदेला तार सीडोपोडिया अच्छी क्षीणपाद अच्छी कूटपाद अच्छी धरला तापर धीरे 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 आब्जॉर्प्शन है शरीर भितर से पड़ा। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आमे जो खाऊचे आमे जहाँ खाऊचे आमे सीधा सड़क खाई दौचे। तो दैट इज अंडर प्राणी सम पोषण
फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ओके सेकेंड विल स्टार्ट प्राणी सम पोषण सरीगला परे आसिला साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अर्थ हूँ कौन मृतोपजीवीय मृतोपजीवीय पोषण मृतोपजीवी अर्थ द saprophytic nutrition means the organism which cannot prepare their own food, they doesn't have the chlorophyll of their own, so they are depending, they cannot prepare their own food, but they are depending mostly the dead and decaying vegetation, dead and decaying organisms or organic parts. If they will receive their food from dead and decaying organisms or parts, that type of nutrition is known as saprozoic or saprotrophic nutrition. प्राणी मृतोपजीवीय पोषण मृतोपजीवीय अर्थ हूँ मृत उपजीवीय अर्थ जो जीव दलित गलित अपगलित पदार्थ उपर आवर्जना उपर से मरी जाइए पोचा जिनस उपर निजर खाद्य संग्रह करे ताकू कहुचे मृतोपजीवीय पोषण क्लियर तो से को जीव मृतोपजीवीय पोषण किए किए जाऊँ कहीं कहल किए जाऊँ छतु कबक आउ ईस्ट जातीय मृतोपजीव तमें समस्ते सोमवार दिन शिव मंदिर जाऊ जाइकी नड़िया आनी से नड़िया तुम न खाई बाहर रखिदिव 3 दिन पर देखियो से गोटे एत बड़ बड़ सब गछ टाइप उठो धला धला गछ 4 दिन पर देखियो सेटा टिके टिके हलदिया कलर हो 5 दिन 6 दिन पर देखियो सेटा टिके माटिया कलर हो 7 दिन 8 दिन पर देखियो सेटा कला हो से सब कौन अच्छे फिम्पी ठीक अच्छे फिम्पी तापर कबक से कबक छतु और ईस्ट जातीय छतु और ईस्ट कथा तो तुम जाच मशरूम कथा जाच छतु कथा जाच तो यही सब जिनस कौन करते जो छतु कौटी उठे जो 50 वाला जिनस थी छतु बाहर तो आम कह उद्देश्य हूँ मृतोपजीवी अर्थ जो जीव दलित गलित अपगलित आवर्जना और पोचा सड़ा जिनिस उपर निजर खाद्य संग्रह करे ताकू कहुची मृतोपजीवीय पोषण सेमिति द saprophyltic nutrition who can take their food or receive their food from the dead and decaying vegetation is known as saprotrophic nutrition. Clear? Next we'll start about पारासाइटिक न्यूट्रिशन और आम कौन कहवा ना परजीवीय पोषण परजीवीय पोषण कौन मृतोपजीवी आम जानले हेटेरोट्रॉप्स आम जानले साप्रोट्रॉपिक्स आम जानले परजीवीय पोषण इज नोन एज पारासाइटिक न्यूट्रिशन पारासाइटिक न्यूट्रिशन कौन हु आर पारासाइट्स हु आर पैथोजेन्स परजीवीय कौन परजीवी अर्थ देखो झील मानकर मुख्यतः मुंडे कौन थाए उकुणी तो उकुणीटा कौन करे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे कि ना सी कौन करे मुंडरू आम रक्त शोषण करे रक्त शोषिकी बंचे कुकुर कि गाई मान देख कुकुर कौन लगी था टिंक टिंक निजे खाद्य प्रस्तुत करे कि ना सी कौन करे ना गाईर कि कुकुर शरीर रक्त शोषण करे मशा गोटे देखा मशा कौन करे ना आम शरीर फोड़िकी रक्त शोषण करे सो दे ऑल आर पारासाइट्स एमाने प्राणी विषय गले तुम के देखीच गोटे गछ उपरे आउ गोटे गछ उठी से गचर चेर नत्र से गछ उठी आ से गछटा ए बड़ गचर खाद्य शोषण करके से बंचु रसना भांडा निर्मूली एसब गछ देखीच तो से प्लांट्स से निज खाद्य निजे प्रस्तुत नक अन्य गचरू से पोषक शोषण करके बंचती तो से अन्य निर्भर करते
तो अन्य उपरे निर्भर करी आ पोषण शोषण करी बंचिबा को कहउछ हमर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो हु आर पैरासाइट्स? Who are vectors? Who are hosts? Okay. Parasites are those which can cause diseases. Pathogens are those which can cause diseases. Who are pathogens? Mostly the parasites. They are depending on others. They are receiving food from the others, and they are leaving some materials, some microorganisms which will cause disease in the host cell. For example, if you take mosquito just punching here and sucking blood. Only this thing the mosquitoes are doing? No. Mosquito is leaving the plasmodium parasites. Malaria parasites, you can say plasmodium. Plasmodium also 4 types. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, and Plasmodium falciparum, which will cause cerebral malaria or brain malaria. आम कह कौन ज्वरटा होगा ब्रेन उठीगला मुंड को उठीगला ज्वर मुंड को कौन उठीगला दैट इज कॉल्ड cerebral malaria or brain malaria, and the causative agent is Plasmodium falciparum. So here the causative agent is Plasmodium falciparum is external. Plasmodium is inside, it will be growing up. As with the malaria parasite, malaria will cause, brain malaria will cause, and different things, appetite will loss. So question is, these are parasites, and many parasites are also there, many microorganisms are there which are inside our body. Okay, the parasites are generally 2 types: exoparasites and endoparasites, right? What is exoparasite? The parasite which are present externally, sucking externally, receiving food externally, present in outside of the body. जो parasites हमारा बाहर शरीर थे से माने बाहर खाद्य ग्रहण करेंगे, आम शरीर ऊपर रहिबे, आम शरीर बाहर खाद्य ग्रहण करके से माने बंचिबे और वंश विस्तार करेंगे और रोग मध्य सृष्टि करेंगे, रोग जीवाणु छाड़ी. क्लियर? ताको कहउछ हमर एक्सोपैरासाइट, बही पैरासाइट्स बोली कहबा. ओके, एक्सोपैरासाइट्स की हमर लाइस जोडा को हमें उकुनी बोली कहै. क्लियर? और एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होची हमर अंतनळी भितरे जे अछि, की अछि ई कोलाई अछि, बालांटिडियम कोलाई अछि. जो ई कोलाई रहे से कोन करे इस्चेरिया कोली बोली कहैथौ, से कोन करे हम अंतनळी रहे, जति कि हमर डिब्राइस अछि ताकू से खाई के बंचे, आउ कोन करे से विटामिन B12 हमकु देइथा. So in the sense it will present in our intestine, taking food, debrise, and will provide vitamin B12. Vitamin B12. So here taking debrise is living there, but he is giving the essential vitamin which is required for our body. That is giving that. So we can say the parasite which is present inside is known as endoparasite. Parasite which are present outside is known as exoparasites. Clear now? परोपजीवी जो थिला, परोपजीवी अर्थ से माने जो माने बाहर हम ऊपर अटैक करंती से माने बाह्य परजीवी, अंतनळी रे जे रहिता से होची अंतःपरजीवी. क्लियर नाउ? आ परे हमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परे हमें जीवा परोपजीवी पोषण परे हमें जीवा लास्ट symbiotic nutrition और सहजीवीय पोषण. अच्छा, बर्तमान जानिबा जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कौन, प्रथम जाना सहजीविता कौन. अच्छा, तमें मैंने जिते पिकनिक करने जाओ, कोई पहाड़ उपर जंगल उपर जाओ, जंगल भीतर को जाओ, पहाड़ उपर जाओ, केबे देखी गोटे घंच जंगल भीतर गोटे पहाड़ थी, से पहाड़र पत्थर उपर एते बड़ बड़ पत्र थी गछ सब माड़ी थी. केबे देखिछ? जदि देखिछ ताको कौन कह जाए कहि परिबो? ताको कह जाए लाइकेन, ओडिया रे फुरुफुरी गछ. If you see lichens are there, where you will see, and inside the deep forest where no pollution zone is there, you can find lichens.
Where pollution will be there, no lichens will be there. Where no pollution, there lichen most you will find, and mostly on the rocks, mostly on the rocks of the mountain. So what are lichens? Lichen in the sense algae plus fungi gives rise to lichen. Okay, algae soibala plus kopaka gives rise to furufuri. Gives rise to furufuri. Okay. तो ये कौन आम शिखा सहजीविता कौन सहजीविता अर्थ दुईटी ऑर्गेनिज्म दीटा जीव जो माने ये ता ऊपर निर्भर करे खाद्य पाए ये मध्य ता ऊपर खाद्य पाए निर्भर करे ये ताको सहाय्य करे ये मध्य ताको सहाय्य करे ये तार क्षति करेनी ये मध्य तार क्षति करे ना जोटी दुभय सहाय्य परस्पर को करंती आ उभय खाद्य खाई निजे बंचंती ताको कहा जाउची सहजीविता. Where सहजीविता in the sense it is the interrelationship. What is symbiosis? It is the interrelationship between two organisms where nobody will harm. Both will be getting benefit from each other. Both will be benefited from each other. Nobody will be harmed is known as symbiotic relationship or symbiosis. So in the same way we can find algae plus fungi gives rise to lichen. And another one we can say E. coli. E. coli which is present in our intestine. E. coli which is present in our intestine, it will provide vitamin B12 to us. ये जदि हम ईस्टेरिया कोलाई जोटा कि हमर अंतनळी थाए विटामिन B12 हमको दिए आमर जति अवद्रव अच्छे ताको से खाई से बंचे तो सी आमर भी प्रॉफिट कला आ निजे भी प्रॉफिट पाइला तो आमर भी किछ असुविधा हलानी तार भी असुविधा हलानी आमे तार किछ खेती करलेनी सी भी आमर किछ खेती करलानी. ओके वी बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर आमे उभय गटू कोन पाइला बेनिफिट पाइला. तो ए रिलेशनशिप को कहउची कोन ना सिम्बायोसिस और सहजीविता. क्लियर. आलोक श्लेषण बा फोटो सिंथेसिस. आलोक श्लेषण बा फोटो सिंथेसिस कौन आगुरी आम डिस्कसन कर देचे. आलोक श्लेषण कौन आउ कहया उचित नहीं. तो फोटो सिंथेसिस और आलोक श्लेषण विषय जो जानिबा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट फोटोसिंथेसिस द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच by acquiring four elements, by needing four elements, by requiring four elements. What are they? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. They can prepare their carbohydrate type of food is known as photosynthesis. The question is photosynthesis purpose. What is there? What are the strategies of the structure? Two types of parenchymas are there. दुई प्रकार parenchyma कोष अछि जो कोष की हम फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करता अछि. Who are they? One is palisade parenchyma and the second is spongy parenchyma. कौन कौन? palisade parenchyma और स्पंजी parenchyma. ये दुई प्रकार parenchyma हमको आधार भाव रे हमको हेल्प करंती कोन ना फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करंती. आउ कौन करंती एथिरे किछि संतोर कथा. संतोर को आमे एंजाइम बोली कहि थाउ. ओके ए संतोर को एंजाइम कोन करंती ए माने आमे जानि जे एंजाइम गुडी को बा संतोर को गुडी को ए माने कोन भाव रे यूज होंती. ए मान काम कोन ए माने मोस्टली प्रोटीनासियस इन नेचर. ए माने पुष्टिसार जातीय and they are used as the
बायोकाटालिस्ट जैव उत्प्रेरक तो मैंने बायोकाटालिस्ट हिसाब से कार्य करती और जैव उत्प्रेरक हिसाब से कार्य करती। कैटालिस्ट कौन? कैटालिस्ट होची गोटे बायोकेमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, राइट? If reactants are there, gives rise to product. If with the reactants, some chemicals, some metals will be added on, it will just speed up of the reaction, and after getting the product, it will just leave from that place. In the sense, biochemical reaction रे जदि गोटे मेटाल हो कि गोटे रिएक्टेंट हो कि केमिकल्स हो जी कि रिएक्टेंट सहित मिसे रिएक्टेंट सहित मिसिकी केवल स्पीड अप करे रिएक्शन टा स्पीड अप कर दिए कला पर सी निजे अलग है तो तार किसी नष्ट हो न था। सो दैट इज नोन एज कैटालिस्ट एंड दीज आर ओनली द एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। तेणु एंजाइम को बा संतरक मानू आम जैव उत्प्रेरक बा जैव जैव उत्प्रेरक accelerator who will speed up the reaction, they are known as accelerator or त्वरक। So most thing is आलोक श्लेषण दुई प्रकार प्रक्रिया होता है। गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया आ गोटे अंधार प्रक्रिया। 1905 F ब्लैकमैन 1905 मसीह F ब्लैकमैन बाहर कले कौन कहले से ना बिकॉज सी आलोक श्लेषण कोठी हुए आप कौन दरकार हम गोटे स्ट्रक्चर देखा एटा कौन करे पिले डबल लेयर स्ट्रक्चर आ कौन कहबा क्लोरोप्लास्ट आम ओडिया कहे प्लास्टिड लबक। तो जो लबक आम जानी से लबक केते प्रकार आगर आम पढ़ुले 3 प्रकार लबक किंतु एबे पढ़ुचे 2 प्रकार लबक। लबक कौन जान प्लास्टिड्स से प्लास्टिड केमती गोटे हूँ कलर्ड प्लास्टिड्स गोटे हूँ कलरलेस प्लास्टिड्स। तो आम आगु पढ़ुले क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट देखा लिकोप्लास्ट हूँ कलरलेस प्लास्टिड्स जोड़ा कि श्वेत लबक आम कही था। क्लोरोप्लास्ट हूँ ग्रीन कलर प्लास्टिड्स जोड़ा कि सबुज कणा बा हरित लबक कही था। क्रोमोप्लास्ट जोड़ा कि वर्ण डिफरेंट कलर प्लास्टिक जोड़ा कि आम वर्ण लबक कही था। तेणु ये 3टा जब मिसेदेवा वर्ण लबक आ सबुज लबक गोटे करदे और धलाटा गोटे अलग करदे तेज आम 2टा प्रकार पाइले गोटे है कलर्ड प्लास्टिक गोटे है कलरलेस प्लास्टिक। गोटे श्वेत लबक धला हूँ टोटाल अलग रहा आ गोटे वर्ण लबक क्लीयर। तब ट्राकिड्स मनी प्लांट गछ एटा सब देखुव से सब वर्ण लबक अच्छे क्लीयर। तो ये देखा से क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर उपर टी जा। क्लोरोप्लास्ट हूँ देख डबल लेयर स्ट्रक्चर अच्छे ता भितर तुम टंकिकिया कॉइन कि 2 टंकिया कॉइन से सब थाक कर रख पिला बेले रखुव ना ना रखल। तो थाक कर रखिले सेगुड़ा केमी देखा गोटे पर गोटे गोटे पर साइज देखा थाक कर आगुड़े से थाक कर रखा है सेमती आम आउ गोटे थाक करवा जो टंकिकिया कि 2 टंकिया कॉइन थाक हेल्ले जमी देखा जाए आउ गोटे थाक करवा है। तो आ भितर देख डटेड स्ट्रक्चर सब अच्छे है। तो यही स्ट्रक्चर को गोटे गोटे कौन पाँच स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड या कहते ग्राना कौन कहते हैं ग्राना। ये जो डट 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 स्ट्रक्चर देखुच धड़ा प्ररस सब अच्छी आपको कहे स्ट्रोमा। ये टोटाल है ग्राना आपको है स्ट्रोमा। आम जाने 2 प्रकार प्रतिक्रिया चलती गोटे हूँ आलोक प्रतिक्रिया आ गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया।
से आलोक प्रक्रियाटा आमर ग्रानारे थाए अंधकार प्रक्रियाटा आमर स्ट्रोमा होता है मन रखियो 1 मार्किया क्वेश्चन पाए आलोक प्रक्रिया ग्रानारे अंधकार प्रक्रिया स्ट्रोमा सहायक होता है या परे आम जा जो आलोक प्रक्रिया कौन कौन होता है मुख्यतः आम किसी पॉइंट्स मु कहूँ एटीपी प्लस एनएडीपी ये दुईटा जो उत्पन्न होती दुईटा को आलोक श्लेषण शक्ति कहा जाए शेष कौन हुए ना एटीपी प्लस एनएडीपी एटीपी केमती आसे एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीपी प्लस पीआई गिव्स राइज टू एटीपी ठीक अच्छे ये गोटे एंजाइम काम करे ताको कहूँ एटीपेज एंजाइम उपस्थिति रे एडीपी माने एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट डाइ माने 2 प्लस पीआई माने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गोटे फॉस्फेट मिसी गला दीटा थिला एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट थिला गोटे फॉस्फेट मिसी गला से कोन हे गला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हे गला ट्राइ माने तीनटा फॉस्फेट हे गला तो एटीपी plus Pi equal gives rise to ATP in presence of enzyme ATPase ए एंजाइम रो उपस्थिति रे एटा तयार हुए एति हवा पाए जारण प्रक्रिया रे मिनिमम 30 किलो जूल शक्ति यूज जोड़ा कि हम नियरली 30 किलो जूल शक्ति दरकार है तो ए जिंस जानि सारला परे आउ कोन हुए आउ शेष रे हमकु गोटे जल अणु स्प्लिट है कि H प्लस आ गोटे OH माइनस आयन दे दी H प्लस आ OH माइनस आयन दे दी तापर हम जिबा अंधकार प्रक्रिया रे कोन कोन हुए एथिरा हमर जो जिंस गुडी के पाइला में एटीपी पाइले एडीपी पीआई एटीपी पाइले फुल फॉर्म जानिलो एनएडीपी किछि फुल फॉर्म टिके पे डिस्कशन कर देबा F M N N A D N A D P N A D P H ओके बर्तमान देखा F M फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ओके N A D निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ओके ये भली सब नामकरण मन रखियो आमे आगु टिके पूर्व कहितली एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ओके ये सब जिनस मन रखिले कोन हबो कि बेले बेले याकू फुल फॉर्म पक्पचे परीक्षा रे गोटे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव पाई तो फुल फॉर्म पके दोछु तापर हम जिबा अंधकार प्रक्रिया को जिबा अंधकार प्रक्रिया रे गोटे छोटो जिंस आरयूबीपी और रूबिस्को ये दुटा हूँ इंपोर्टेंट मन रखा आरयूबीपी कौन आरयूबीपी कौन है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट अच्छा रूबिस्को कौन राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ओके आरयूबीपी राइबोलोज बिस्फॉस्फेट रूबिस्को एंजाइम रो नाम होची रूबिस्को आर फुल होची राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एतिकी मन रखिबा अंधकार प्रक्रिया परे आमे मनीषर पाकतंत्र नेक्स्ट क्लास को पढ़िबा तो आज आमे कौन कौन पढ़िले न्यूट्रिशन रो प्रकारभेद बा पोषण प्रकारभेद
स्वभोजी पोषण परभोजी पोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन दरकार हुए ताको आमे कौन कहू ना दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स कहीं ना से माने प्रोड्यूस कर दे आर प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोपिक स्वभोजी पोषण कहते आउ से उत्पादक कहते उत्पादक कहीं ना से उत्पादन करते नंबर 2 आउ कौन पढ़े को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है स्वभोजी और परभोजी परभोजी आम पढ़ले परभोजी 4 प्रकार कौन कौन गोटे प्राणीसम पोषण गोटे मृतपजीवीय पोषण गोटे परजीवीय पोषण आ गोटे सहजीवीय पोषण प्राणीसम पोषण को आम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहवा मृतपजीवीय सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहवा आउ परजीवीय पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहवा आउ लास्ट होउछ हमर सहजीवीय पोषण बा सहजीवीयता जोटा कि आम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोली कहवा ए विषय में जानिले तापर आम जानले फोटोसिंथेसिस रो इक्वेशन कौन 2 प्रकार इक्वेशन भी जानिले आम तापर आम कौन जानले फोटोसिंथेसिस संस्था कौन आधार कौन पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा कार्य कौन तापर आम जानले आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया कौन आउ से कोएंजाइम और विभिन्न एनएडी एफएमएल यार फुल फॉर्म जानले ठीक अच्छे आज आउ थे काली बाय बाय।